Welcome dear students. Hope you all are preparing well for your exams. Students, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे. Find the values of the following with the help of logarithm table. Part 1, 3.68 into 4.21 by 5.234. First, let the given value equals x. Then, दोनों sides पे log apply कर देंगे. Now, quotient law apply होगा. नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जिसकी वजह से log की वैल्यूज ऐड हो जाएगी. देन इन 3 वैल्यूज का log लेके वैल्यूज राइट कर देंगे. आफ्टर दैट इन वैल्यूज को ऐड अप करेंगे. देन log अदर साइड पे आज के एंटी लॉग हो जाएगा. लास्टली एंटी लॉग ऑफ 0.4713 इज 2.960. पार्ट 2, 4.67 into 2.11 into 2.397. इस क्वेश्चन में दोनों साइड्स पे log लेके सिंपली प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर लाएंगे. ट्राई इट योरसेल्फ. पार्ट 3, 20.46 square into 2.4122 divided by 754.3. First, let this value equal x. Then, take log of both sides. After that, apply product and quotient law. In next step, we will apply power law. Now take log of given values. Then, do basic arithmetics in this step. After that, take antilog of 0.1266. Hence, 1.339 is the answer. Part 4, cube root of 9.364 into 21.64 divided by 3.21. Let this value equal x. Then, take log of both sides. Then, open cube root and write 1 by 3 as power. After that, apply product and quotient rules. Now, apply power law, due to which 1 by 3 will be written before log. Now, take log of given values. Add and subtract the given values. Now, you got x equal 1.1256. Log will become antilog on other side. Hence, antilog of 1.8256 will be 14.21. Goodbye dear students, thank you for watching.